Hello everyone. Today we will learn about an important carbon compound that is ethanoic acid. CH3COOH and its common name is acetic acid. अच्छा, इसका structure if you will see it will be like this. CH3, ठीक है, and C double bond OOH. So this is ethanoic acid. ठीक है. Now, its physical properties are ethanoic acid is liquid at room temperature. Okay. It has sour taste. खट्टा taste होता है इसका. And a pungent smell. Smell बहुत pungent होती है. From where this pungent smell has come? When you will keep ethanoic acid for fermentation and its smell becomes pungent. Just like vinegar. Vinegar जैसा ही उसका taste और smell है. क्योंकि vinegar भी कहाँ से बनता है? Ethanoic acid से बना है. Ethanoic acid is colorless. It is soluble in water. It freezes in winter like glacier ice. अच्छा, glacier ice कैसी होती है? एकदम white है ना, एकदम वैसी ice. When you freeze ethanoic acid, तो glacier ice के जैसे it will get frozen. ठीक है? And hence it is also known as glacial acetic acid. यहाँ से उसका नाम पड़ा ये. Okay, now let's see how the ethanoic acid is prepared. It is we get ethanoic acid from ethanol by oxidation reaction. तो इसका oxidation कैसे होता है? In the presence of KMnO4 potassium permanganate, or you can use K2Cr2O7 potassium dichromate. These two are strong oxidizing agents. तो इन oxidizing agents की presence में the ethanol is converted into ethanoic acid. ठीक है, preparation समझ में आ गया. Now let's see the chemical properties of ethanoic acid. The first reaction is with base. Now देखो यहाँ, this is ethanoic acid, this is an acid, correct? When it reacts with NaOH, that means base. ठीक है, so we have studied that whenever an acid reacts with an base, what we get? We get a salt and water. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? Salt मिल रहा है. So what is the name of this salt? This is sodium ethanoate. Ethanoate. And it is also known as sodium acetate. So this is what we get when ethanoic acid reacts with the base, sodium hydroxide. Okay, let's see the next reaction with carbonates and hydrogen carbonates. See, whenever this ethanoic acid is reacting with the carbonate, sodium carbonate, or you can take a sodium hydrogen carbonate, what we get? Again, we are getting a salt. है ना, salt मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है एंड वाटर रिलीज हो रहा है. तो यहाँ पर भी वी नो दैट व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, करेक्ट? सो व्हाट वी यूज टू गेट? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं, दैट लाइम वाटर कन्वर्ट्स इनटू मिल्की कलर्ड एंड दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड. ठीक है, तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन एंड द सेकेंड रिएक्शन यू कैन सी दैट इन दोनों केसेस में दिस शोज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एथेनोइक एसिड. ठीक है, ओके. Now let's move on to the next reaction, that is the reaction with ethanol, and this reaction is also known as esterification. So how do you get ester? यहाँ A नहीं आएगा. When acid reacts with alcohols, we get esters in the presence of some concentrated acid, or you can say an acid catalyst. कोई भी catalyst होना चाहिए जो कि acidic catalyst की presence में you will get an ester group. Now this is the ethanoic acid. When reacts with alcohol in the presence of, here what we are using? We are using concentrated sulfuric acid.
what we get? We are getting here this group. Now, what is this group? Let me explain this here. If you will write, let's write it in detailed structure form. C double bond O, O, CH2, CH3. ठीक है? तो ये जो चीज यहाँ पर हमें जो मिली है, this is called ester. एस्टर क्या है? इट इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस. ये बहुत ही, इसकी स्मेल बहुत ही प्लेजेंट होती है. ठीक है? एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स. एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फ्लेवरिंग एजेंट. इट इज यूज्ड एज एन फ्लेवरिंग एजेंट. जहां पे भी आपको फ्लेवर्स चाहिए, अलग अलग स्वीट फ्लेवर्स, देयर यू यूज एस्टर्स. गॉट इट? फाइन. And what is esterification? When ethanoic acids react with ethanol, means जब भी कोई acid alcohol के साथ react करती है in the presence of acid catalyzed, like here we have used sulfuric acid, it forms a sweet smelling compound called ester, and this reaction is known as esterification. Clear? It's an important reaction. Okay. Let's move to the next reaction, chemical property, that is saponification. Okay, इसमें क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पर एस्टर मिला है, when it reacts in the presence of sodium hydroxide, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो, सोडियम एसीटेट. तो ये okay, let's see here how we get it. CH3, C, double bond O, O, और यहाँ पे था CH2, CH3 in the presence of sodium hydroxide. क्या होगा? ये ग्रुप, एथेनॉल ग्रुप, अलग हो जाएगा. एंड व्हाट वी विल गेट CH3, C, डबल बॉन्ड O, ONA यहाँ पे आ जाएगा. एंड यू विल गेट दिस एथेनॉल विल बी सेपरेटेड. सॉरी, यहाँ पे CH3, CH2, OH. So this is what we got now. Here is, it is the first step in the formation of soap. ठीक है? इसकी long chains को से ही soap form होता है. So this is the first step, or you can say it is the beginning of the formation of soap. That's why this process is known as saponification. Clear? And here its definition. Hydrolysis of ester in the presence of NaOH, means पानी जब आप इसमें डालोगे एस्टर में, in the presence of sodium hydroxide, we get to form soap. Soap का first step यहाँ पे शुरुआत होती है, and this process is known as saponification. Correct? Okay. Now let's see the uses of ethanoic acid. Commercially, it is used in the manufacturing of esters, vinegar, and many other polymeric materials. Now देखो vinegar कैसे बनता है? 5 to 8% जो solution है acetic acid in water, उससे हमें vinegar मिलता है. Vinegar has been shown to reduce high concentration of blood sugar. Blood sugar अगर high है तो उसको reduce करने में vinegar is very helpful. It is also used as a solvent in the production of camphor. Camphor के production में इसको as a solvent use किया जाता है, and it is also used in a cooking ingredients. Okay, the next one is, farmers sometimes spray acetic acid on livestock. Livestock means cattle like cows and buffaloes. उनके ऊपर इसको spray कर दिया जाता है acetic acid को, to stop or reduce the fungal and bacterial growth. Clear? So this was all about your ethanoic acid, and in the next class we will study about the soaps and detergents. Thank you and bye.